Hello, gorgeous people. Welcome back to my channel. So, if you are new to this channel, hey, my name is Swati Rawat, and I'll be very happy if you take a moment and subscribe my channel below. So, without wasting time, let's get started. So, as you can see, I already made a mark sheet. So, today we will do insert. Under insert, firstly we have pivot table. So, for pivot table, firstly we have to select that sheet. जिससे हम बनाएंगे pivot table. So pivot table पे क्लिक करना है. ये सारी शीट सिलेक्ट हो चुकी है. ओके. एंड लाइक इसमें क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ आप राइट साइड में देखिए रोल नंबर्स, नेम्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल परसेंटेज, रैंक जो भी है वो ऑप्शन दे रखे हैं. तो मैं चाहती हूँ मुझे नेम्स दिखे, वो उन्हीं में टिक मारूंगी जो मुझे शो होगा वही शो होगा. इंग्लिश, मैथ्स, उनका टोटल टोटल भी आ जाएगा वहाँ पे. एंड परसेंटेज. तो सी लेफ्ट साइड में उन्हीं के जिनको मैंने यहाँ पे टिक मारा राइट साइड में वही शो हुए हैं और उन्हीं का पूरा शीट बना है. तो ये इसी के लिए यूज होता है. तो कंट्रोल जेड से इसे मैंने पैक कर दिया. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डू पिवट चार्ट. सो पिवट चार्ट के लिए बेसिक यूज होगा. ओके. एंड मैं चाहती हूँ नेम्स दिखे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल एंड परसेंटेज एंड इवन रैंक ऑल्सो. सो उसी का चार्ट है. एंड यू कैन चेंज कलर ऑल्सो लाइक ग्रीन, पर्पल, ब्लू, जो भी आपको पसंद हो. लाइक सो या इसी के लिए यूज होता है. विच इज वेरी सिंपल. मूविंग फॉरवर्ड, सो अब हम करेंगे टेबल. टेबल में क्या होता है, लाइक हमने जैसे प्रीवियस उसमें फॉर्मेट एज टेबल पे किया था, सेम वही है. टेबल में वही है, कुछ नहीं है. वो खुद सिलेक्ट हो जाएगा और टेबल दिख जाएंगे. एंड कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं. सो या इसी के लिए होता है. मूविंग फॉरवर्ड, पिक्चर. पिक्चर के लिए क्या है, लाइक आप कोई भी पिक्चर वी कैन चूज. लाइक मैं डॉग चूज करूंगी बिकॉज आई लव डॉग. सो या so as you can see I choose the dog because I love dog. So you can we can edit that photo, like we can change the color. like देख सकते हैं background और भी colorful हो गया, which is looking very beautiful. So yeah, इसी के लिए यूज होता है. Moving forward, we have clip art. Clip art में क्या होता है, like कोई भी आपको इसमें चूज करना है. ऑलरेडी इसमें फोटो क्लिप आर्ट जैसी फोटोज हैं एंड वी कैन चूज एनी फोटो. लाइक तो बस ये इसी के लिए यूज होता है. इसमें कुछ तो मीन नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, शेप्स से क्या होता है, लाइक वी हैव लॉट ऑफ शेप्स हियर एंड like triangle, and we can like fill color and ताकि और भी ब्यूटीफुल लगे. और भी शेप्स आप कर सकते हैं, like rectangle. so आपको भी इसमें कलर फिल कर सकते हैं. और इसमें एक और शेप का, लाइक वी कैन डू मैनिपुलेट ऑल्सो. लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक इमोजी लिया, वो दूसरे पेज पे करती हूँ, लाइक थर्ड पेज पे. एंड मैंने इस पे कलर किया कोई, लाइक
एंड मैनिपुलेशन क्या होता है, जैसे इसमें स्माइली कर रहा है एंड इस सैड में चेक कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक सो इसे मैनिपुलेशन कह सकते हैं। सी सो या इसी के लिए यूज होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डू स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, लाइक आप क्लिक करेंगे और इसमें आप कोई भी जैसे लाइक इसमें बहुत सारी लाइक लिस्ट है, लाइक ये ना ग्राफिक इसमें, तो जैसे आपने ये वाला चूज किया एंड इसमें आपने लिखा ए, ए जैसे सपोज किसी का नाम है, बी एंड सी एंड डी ई, सो या इसी के लिए यूज होता है। सो सो या इसी के लिए यूज होता है। मूविंग फॉरवर्ड, स्मार्ट हो गया है एंड या वी कैन चेंज कलर ऑल्सो, लाइक ताकि और अट्रैक्टिव लगे। नेम हट के लाइक अगर हम कलरफुल करते हैं तो ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। सो या और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। सो या इसी के लिए होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डू स्मार्ट आर्ट में आप जैसे देख सकते हैं इसमें बस बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे पिक्चर का भी, पिरामिड का भी, मैट्रिक्स का भी, रिलेशनशिप्स का भी, हाइड्रेसी का भी, साइकिल प्रोसेस लिस्ट। सो या विच इज इंटरेस्टिंग, राइट। एंड स्क्रीनशॉट में क्या होता है, लाइक आपने इस पर क्लिक करना है एंड स्क्रीन क्लिपिंग करनी है और लाइक ऑफिस में स्क्रीनशॉट के लिए यूज होता है, which is very easy, I guess. So yeah, that it's very